और लिखें। आज लंबे और तक पढ़ूंगी। हाँ, तुम्हें भी पढ़ना है तो तुम आ सकते हो। स्लॉट 1 60 मिनट लिख दो ना आदेश। दिस वन आई थिंक ये तुम्हें आजियो पे मिलेगा। Thursday is 28th 0 5 2026।
स्लॉट 1 60 मिनट का है, तुमने ब्रेक एट 10 लिख दिया, 10:30 पे होता है ना। CS3 CH2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 या अल्लाह। CH propene peroxide ion, propene peroxide ion, peroxide, propene peroxide, propene ozonide, propene ozonide, propene ozonide, propene ozonide, propene ozonide, propene ozonide, 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 propene ozonide, propene ozonide, propene ozonide, propene ozonide, propene ozonide, propene ozonide, astaghfirullah. HCHO, ethanol, ethanol, ethanol and methanol. Okay. CH3, C double bond, CH2. I don't know if I'm supposed to do it or if I'm not supposed to, then I somehow have to do something. CH3, 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 CH3,
सी, दूसरा वाला सी से. It's okay, ma. It's okay. CH3 দুইটা তিনটা চারটা O O O. Okay. एक दो तीन चार, एक दो तीन चार. ओके. यहाँ पर फर्दर तिम्रो के भनिन्छ? एक दो तीन कीटोन. CH3 C bond O, CH3 कीटोन HCHO. ZnH2O. ZnH2. Okay. O3. Okay, this is not Zn. Here we have O3. Zn O. ZnH2O. It's okay, ma. ZnO. Zn H2O. Okay, Zn plus H2O gives ZnO. O3. Ozonolysis of alkene. Ozonolysis of alkene. Ozonolysis of propene ozonide. Propene ozonide. Okay. Ethanol and methanol. Ethanol and methanol. Ozonide. Okay. Ozonide. And then okay. HCHO and ketone. Propanol. Then H2O. Okay. By ozonolysis of alkene hydrocarbons. HgSO4. Mercury sulfate. Acetaldehyde. Ethyne gives aldehyde. All other alkyne gives ketone. Okay. Preparation of aldehyde from acyl chloride, from nitriles and ester, from hydrocarbons. Okay. From acyl chloride, acid chloride, then from nitriles and ester, then from hydrocarbons. Acyl chloride, from nitriles and ester, from hydrocarbons. From hydrocarbons. From hydrocarbons. Hey, नैतिक. It's नैतिक. हाँ है ना, नैतिक निशांत. From acyl chloride, from acyl 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 chloride, CHLORID. तुम्हारा बोर्ड्स होने वाला था ना नैतिक. From acyl chloride. From acyl chloride. From acyl chloride. From acyl chloride. Okay, from acyl chloride, acid chloride. From acyl chloride. Preparation of aldehyde from acyl chloride, acid chloride. Acid chloride, CHLORID chloride. From acyl chloride, acid chloride. Okay, then from nitriles. NITRILES. From nitriles, and then we have nitriles and ester. ESTER ester. Okay. From hydrocarbons we have by oxidation of methyl benzene. By oxidation of methyl benzene, use of bromyl chloride, CrO2Cl2. Okay. Then by side chain chlorination followed by hydrolysis. By side, okay. By chromic acid, chromic oxide. By side chain chlorination followed by hydrolysis. By oxidation of methyl benzene, by side chain chlorination followed by hydrolysis, and by Guterman-Koch reaction from hydrocarbons. Okay.
from acyl chloride. From acyl chloride. Okay, acyl chloride, acid chloride is hydrogenated over catalyst, palladium or barium sulfate. This reaction is called Rosenmund reduction. Rosenmund reduction. Rosenmund reduction from acyl chloride. From acyl chloride, acid chloride. Acyl chloride. From acyl chloride or acid chloride, Rosenmund reduction. Rosenmund reduction. Acyl chloride, acid chloride is hydrogenated over catalyst, palladium on barium sulfate. Over catalyst, okay, hydrogenated over catalyst, palladium on barium sulfate. Barium sulfate. This reaction is called Rosenmund reduction. Rosenmund reduction of acyl chloride. Hydrogenated over palladium, catalyst palladium on barium sulfate, BaSO4 benzaldehyde bananes. Okay, Rosenmund reduction. Preparation of aldehyde. This is preparation of aldehyde. ALDEHYDE. Preparation of aldehyde. Rosenmund reduction. aldehyde बनिन्छ acyl chloride बाट. C double bond O Cl H2 catalyst symbol छ हाइड्रोजनेसन गर्दैछ के catalyst के छ C double bond O Cl H2 in the presence of H2 in the presence of H2 palladium on the presence of barium sulfate. Chlorine leave गर्छ benzaldehyde बनिन्छ C double bond O H. This HCl leave हुँदैछ okay benzaldehyde acyl chloride CHLORID. Acyl chloride or acid chloride benzaldehyde बनेलाई Rosenmund reduction भन्छ from acyl chloride. Acid chloride Rosenmund reduction. Rosenmund reduction. Okay. From nitriles, NITRILES, nitriles and ester, ESTER, ester. From nitriles and esters. From nitriles and esters, nitriles are reduced to corresponding imine with stannous chloride, that is STEAN. SnCl2, stannous chloride, tin, in presence of hydrochloric acid, with which on hydrolysis gives corresponding aldehyde. Okay, this reaction is known as Sven reaction. Nitriles are reduced to corresponding imine. Imine is C double bond N. C double bond N is imine. Okay, C double bond N is imine. C double bond N is imine. C double bond N is imine. Nitrile is reduced to aldehyde in the presence of stannous chloride, SnCl2 and HCl. Okay, nitriles. RCN is reduced to aldehyde in the presence of SN
Cl2 plus HCl gives, it's okay ma, RCN, RCHO, RCHO. Okay, this is stannous chloride. STANNEOUS, stannous chloride. CHLORIDE chloride. STANNEOUS, STANNOUS, 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 stannous chloride. STANNOUS, stannous chloride. STANNOUS, stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, RCHO. बनिन्छ ओके, बट यहाँनिर इन्टरमिडिएट चाहिँ के बनिन्छ त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो, RCH इम्युन बनिँदो रहेछ ओके. नाइट्राइल्स आर स्टेफेन्स रिडक्सन, यसलाई के भन्छ, स्टेफेन्स रिडक्सन, स्टेफेन रियाक्सन ओके, स्टेफेन रियाक्सन, स्टेफेन EHN, स्टेफेन रियाक्सन, स्टेफेन रियाक्सन, स्टेफेन रियाक्सन, स्टेफेन रियाक्सन, स्टेफेन रियाक्सन, स्टेफेन रियाक्सन, स्टेफेन reaction, Stephen reaction, Stephen reaction, Stephen reaction. Okay, यहाँनिर तिम्रो इमिन बनिन्छ ल, R C double bond RCH double bond NH, CH double bond NH, imine, 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 H3O plus RCHO, 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 RCHO. Okay, from nitriles and ester, from okay. Hi Karthik, you are not supposed to call me Dora. From nitriles and ester, my name is Ima, to be honest. From nitriles, Stephen's reaction, okay, Stephen's, STEPHEN, Stephen reaction, REACTIN reaction, Rosenman reduction, nothing like you in Rosenman reaction, Rosenman reduction, acyl chloride, from acyl chloride, acetophenone, is it acetophenone? Fluoroacetophenone or something. Fluoroacetophenone. CH3, C double bond, chloroacetophenone, yes, chloroacetophenone. Okay, this is not, I don't know the name of this. Acyl chloride बोल सकते हैं, okay, acyl chloride, acid chloride को देखिए, हाइड्रोजनेशन गर्दाखेरि BD BSS मा हालेर त्यसलाई के दिन्छ, RCH, benzaldehyde, benzaldehyde. Good morning, Uncle Lama. Benzaldehyde दिन्छ हो, त्यहाँदेखि HCl निस्किन्छ कि फ्रम नाइट्राइल्स एन्ड एस्टर. नाइट्राइल्सबाट स्टेफेन्स रियाक्सन भन्छ, इमिन बनिन्छ, इमिनमा C डबल बोन्ड एनसँग डबल बोन्ड छ नि इमिन ल. स्टेनस क्लोराइडमा STANNOUS, स्टेनस क्लोराइड, STANNOUS, स्टेनस क्लोराइड, स्टेफेन रियाक्सन, स्टेफेन रियाक्सन, RCN plus SnCl2 plus HCl gives RC double bond N H1 H1 इसलिए further H3O plus सँग ट्रीट करें भने R CHO imine. Alternatively, nitriles are selectively reduced to diisobutyl hydride. Okay, alternatively, nitriles are selectively reduced by isobutyl aluminum hydride, dibutyl H, diisobutyl aluminum hydride, diisobutyl aluminum hydride.
diisobutyl aluminum hydride, diisobutyl aluminum hydride, diisobutyl aluminum hydride to imines followed by hydrolysis to aldehyde. Hydrolysis to aldehyde. Imines CH double bond NH followed by hydrolysis to aldehyde. Okay, first answer. Okay. Diisobutyl aluminum hydride. CHO. Similarly, esters are also reduced to aldehyde with dibyl H. Aldehyde binding. Okay. Dibyl H, no? Dibyl H. Dibyl H. Dibutyl. हजुर आमा सुकमनी आन्टीकोमा जानुभएको छ हजुर सुकमनी आन्टीकोमा जानुभएको छ हजुर सुकमनी आन्टीकोमा जानुभएको छ हजुर हजुर तिमी भन्दा चिकन हजुर यति लामो त लाग्दैन आज घरै मसला हुन्छ नि होइन Thank you. Diisobutyl aluminum hydride. Diisobutyl aluminum hydride. Diisobutyl aluminum hydride. Dibyl H. Diisobutyl
reducing agent, or CH. Okay. Esters are also reduced to aldehyde by dibyl H. Esters are also reduced to aldehyde by dibyl H. Okay. Reduction of nitriles and ester. SnCl2 plus HCl imine H3O plus Stephen reaction. Stephen reaction. Astaghfirullah. I feel so. Stephen reaction. Stephen. हाँ हाँ अनु मैं कुछ दिखाऊं अनु 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 बेबी कुछ क्यूट म्याओ अनु अनु ना जंप गर्नु यहाँ जम्पी हो मेरे पास चिकन है, मेरे पास राइस है, फिर भी मैं इसको खाना नहीं दे रही. अनु म्याओ 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 अनु जम्पी Stephen reaction हुन्छ Stephen reaction भन्छ के इमिन छ यस्तै हो प्लस गरेर भन्छमा के अर्से Stephen reaction तालिकमा डाइ आइसो एल्युमिनियम डाइ आइस हाय अलियाना आज तो ईद है ना, ईद मुबारक. डाइ आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड HYD hydride diisobutyl aluminum 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 hydride मुझे तो कोई इनवाइट ही नहीं कर रहा है अलियाना. diisobutyl aluminum hydride diisobutyl aluminum hydride diisobutyl aluminum hydride diisobutyl aluminum hydride
diisobutyl aluminum hydride, diisobutyl aluminum hydride. Imine RCHO. Okay, Stephen's reaction. Diisobutyl aluminum hydride, diisobutyl aluminum hydroxide, dibal H, dibal H, okay, dibal H or ALH isobutyl, वो भी diisobutyl aluminum hydride, okay, reduce करेगा RCN को isobutyl 2, ओके। तो ये रिड्यूस करके ना RCN से क्या करेगा, RCHO बना देगा, RCN से RCHO बना देगा, ओके, RCN से RCHO बना देगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें डालनी, पहले डाइबल H देन H2, 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 डाइबल H H2, अस्तगफिरुल्लाह, I feel so awkward. CH3 CH double bond CH CH2 CH2 CN CH3 CH CH CH2 CH2 CN aluminum hydride, okay, isobutyl diisobutyl aluminum hydride CH3 CH double bond CH CH2 CH2 CN is reduced to CHO CHO CHO, okay, this is reduced to CHO. Esters are reduced to aldehyde with dibal H, okay. CH3 CH2 9 C double bond O OC2 H5. Dibal H H2 CH3 CH2 9 C double bond O OCH2 CH3 CH2 9 COOCH2. Really? I think this is CHO. CH2 निकलेगा आंसर, okay. Okay, dibal H or water लगाउँदा के Stephensमा stainless chloride use हुन्छ, okay. You studying for NEET? ना I'm not studying for NEET. इस साल तो मैं NEET नहीं दूंगी, दिया तो अगले साल देख लेंगे सिलेबस कितना होगा। वैसे मैं कोई और कोर्स ज्वाइन करने वाली हूँ अगस्त पे, वैसे बता नहीं सकती वो कौन सा कोर्स है, ओके, प्लीज़ उससे आगे मत पूछना। RCN RCHO एल्युमिनियम हाइड्राइड, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद वाटर लगाएंगे, आइसोब्यूटाइल, ओके, RCN से CHO, फिर CHO, एस्टर, ओके, एस्टर हो या एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड नाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप हो या फिर नाइट्राइल ग्रुप हो, नाइट्राइल्स हो या फिर एस्टर हो, डाइबल H के प्रेजेंस पे वो एल्डिहाइड बन जाता है। और एक तुम्हारा स्टेनस क्लोराइड है उस, ओके, वाटर हाइड्रोलिसिस करना ज़रूरी है, ओके। पहले तो तुम डाइबल H से हाइड्रोजनेशन करो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस। Alternatively, nitriles are selectively reduced by isobutyl aluminum hydride dibal H to imines to imines. IMINES, imines is intermediate, intermediate. Imine is intermediate, okay, dibal H, okay, alright. From
from hydrocarbons. Aromatic aldehyde, benzaldehyde, and its derivatives are prepared from aromatic hydrocarbons by the following method. Okay, from hydrocarbons, aromatic aldehyde. Astaghfirullah, why am I getting irritated? It's okay, man. From hydrocarbons, aromatic aldehyde, benzaldehyde, and its derivatives. Okay, benzaldehyde are prepared from aromatic hydrocarbons by the following method: by oxidation of methyl benzene. By oxidation of methyl benzene, strong oxidizing agents oxidize toluene and its derivatives to benzoic acid. Okay, by oxidation of methyl benzene, strong oxidizing agents oxidizes toluene to its derivative to toluene and its derivatives to benzoic acid. Okay, strong oxidizing agents oxidizes strong oxidizing agent oxidizes toluene and its derivatives to benzoic acid. Strongly for this benzoic acid. However, it is possible to stop the oxidation at aldehyde stage with suitable reagents that converts methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize further. However, it is to stop possible to stop the oxidation at aldehyde stage with suitable reagents which that converts the methyl group to intermediate that is difficult to oxidize further. Oxidizing strong oxidizing agents oxidizes toluene. Strong oxidizing agents oxidizes toluene and its derivatives to benzoic acid. However, it is possible to stop the oxidation at aldehyde stage with suitable reagents that convert the methyl group to intermediate that is difficult to oxidize further. The following method are used for this purpose. Okay, methyl benzene, CH3, benzoic acid. Strong oxidizing agent. Any benzene. Okay, bro. Benzoic acid. Benzoic acid. Methyl benzene, toluene butter, benzoic acid. Okay, first is use of chromyl chloride. Complete oxidation or partial oxidation. Complete oxidation हो partial oxidation बोलो. What does that mean? Partial oxidation. Okay. Use of chromyl chloride, CrO2Cl2. Chromyl chloride, CrO2Cl2. Astaghfirullah. पता नहीं क्यों सोच रही. Use of chromyl chloride, then by side chain chlorination followed by hydrolysis. Okay, by Gotterman-Koch reaction. हाइड्रोकार्बन्स पर अपन नहीं एल्डिहाइड. मैं हेलीकॉप्टर दिखाती हूँ. लुक हेलीकॉप्टर देखो ना. हेलीकॉप्टर इतनी जंगली इंसान हो ना. मैं हेलीकॉप्टर दिखा रही हूँ तुम सबको. देखो अच्छे से. बाय बाय. चला गया. By hydrocarbons, aromatic aldehyde, benzaldehyde and its derivatives are prepared from aromatic hydrocarbons.
aromatic hydrocarbons by the following method: by oxidation of methyl benzene, use of chromyl chloride. Okay, use of chromyl chloride, then by oxidation of methyl benzene. एक तो methyl benzene की oxidation से होगी, दूसरा use of chromyl chloride CrO2Cl2. okay, retard reaction. okay, use of chromic acid, दूसरा वाला chromic acid. okay, by oxidation of methyl benzene की oxidation से carboxylic acid बनता है, like benzoic acid बनेगा अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो. अगर हम सही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज़ करें तो एल्डिहाइड पे, जाल्डिहाइड पे भी रिएक्शन रुक सकता है. तो इसके लिए दो मेथड है. एक तो तुम ये यूज़ कर सकते हो क्लोरोक्रोमेट, क्रोमाइल क्लोराइड, यूज़ ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड. और दूसरा वाला क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमाइल क्लोराइड, एक होगा तुम्हारा क्रोमाइल क्लोराइड, दूसरा होगा क्रोमिक एसिड CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड. उसमें बोला है इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड. ओके, क्रोमिक ऑक्साइड एंड use of chromic oxide, chromyl chloride, use of chromyl chloride, CrO2Cl2, chromyl chloride. methyl benzene, benzoic acid, benzaldehyde, CrO2Cl2, chromyl chloride, CHRO, chromyl chloride, CHLORID, chloride, CrO2Cl2. इतनी ज़्यादा क्यों सोचती रहती हूँ मैं, गुस्सा ही आ जाता है. CrO2Cl2. I have an exam preparation. एक बात बोलूँ, तुम्हारा ना वो ट्रांसलेट होके आ गया, ट्रांसलेशन ऑन था ना. आई थिंक यू आस्क समथिंग इन नेपाली. If I have an exam preparation got this, so question mark, you have to write it again. okay, मैंने ट्रांसलेशन ऑफ किया है. CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, CHLORID, क्रोमाइल क्लोराइड में नहीं कर सकती. CHRO, क्रोमाइल क्लोराइड, CHRO, क्रोमाइल क्लोराइड, CHROMyl, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2. Chromic oxide, CrO3. Chromic oxide, तुमने वैसे गलत लिखा है आदेश, मुझे तुम
चाटा लगाने का दिल कर रहा है। चारो ml क्रोमाइल क्लोराइड क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड 10:30 पे ना वो होगा, स्लॉट 1 कंप्लीट होगा। क्रोमाइल क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड CR क्रोमाइल CrO2Cl2 क्रोमाइल क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड oxidizes methyl group to chromium complex, which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde, which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde, which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde, which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde. Itard reaction. CHO CRO पता नहीं। Cl HCl था ना, HCl2 whole twice. Okay, chromium complex OCRO whole twice करने के लिए chromium complex बनिन्छ कि त्यहाँदेखि मात्रै H3O+ हाइड्रोलिसिस गर्दाखेरि चाहिँ CHO आउँदो रहेछ कि टोल्युइन. This is chromyl chloride CHROMyl chromyl chloride CHLORID chloride हाइड्रोलिसिस गर्दाखेरि CHO बेन्जाल्डिहाइड भनिन्छ. के भनिँदो रहेछ? बेन्जाल्डिहाइड ओके. बेन्जाल्डिहाइड अस्तगफिरुल्लाह बेन्जाल्डिहाइड भनिन्छ. ओके, बेन्जाल्डिहाइड बेन्जाल्डिहाइड बेन्जाल्डिहाइड. This reaction is known as Itard reaction. Rosenmund reduction. Then we have Stephen reaction, reaction with dibyl H, and then we have reduction from hydrocarbons, oxidation of methyl benzene. Okay, use of chromyl chloride, that is CrO2Cl2 chromyl chloride CrO2Cl2 chromyl chloride. अगर तुम्हारा बाल ना नोचने का दिल किया ना तो मैं सारा ही उखाड़ देती. दिल किया नहीं, अगर मुझे मौका मिलता तो. Then we have Itard reaction. Itard reaction मा सबैभन्दा फर्स्टमा के लिन्छ? मिथाइल बेन्जिन लिन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले अक्सिडेसन गर्छ CrO2Cl2 को प्रेजेन्समा, क्रोमाइल क्लोराइडको प्रेजेन्समा. देन यो क्रोमियम कम्प्लेक्स बनिन्छ. क्रोमियम कम्प्लेक्स कुन चाहिँ बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो someday CH नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं बनेगा. OCROHCl एक
CrOHCl, दैट इज ये बनेगा CHOCrOHCl होल्ड वाइज अस्तगफिरुल्लाह के CHOCrOHCl कि Cl2 chromium CHROMIM chromium complex अस्तगफिरुल्लाह chromium complex सबके ऊपर गुस्सा करने वाली मैं OCrOHCl2 chromium complex क्यों मैं सोचती रहती हूँ अल्लाह CHO बेंजाल्डिहाइड अस्तगफिरुल्लाह बेंजाल्डिहाइड ओके CrO क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड this is CrO3 is chromic oxide CrO3 chromic oxide CrO3 chromic oxide करेंगे धीरे धीरे से करेंगे ओके chromic oxide John hydrolysis amyl chloride oxidizes methyl chromium complex. Hydrolysis gives benzaldehyde. This is known as Itard reaction. Itard reaction. Rosenmund reduction. Then Stephen reaction. S and Cl2 plus HCl. Stephen reaction. Imine बनेंगे थे imine. मत पूछो मुझे हाँ मेरे कान पक जाएंगे वैसे भी मैं ऐसे ही पागल की तरह हूँ क्या क्या सोचती रहती हूँ तो डोंट आस्क मी पूछो ही ना तो Itard reaction में क्या होता था शायद 2 मंथ तक ही तो करना है जून जुलाई अगस्त दिस इज महीना जून स्टार्ट होने वाला है उसके बाद जुलाई करो उसके बाद अगस्त 3 मंथ ही तो आई थिंक तुम 12 वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर पाओगे तब तक Itard reaction CH okay CH3 toluene methyl benzene toluene को तुम CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड से ट्रीट करो तो तुम्हारा ये बनेगा समटाइम्स CH
CrOHCl2, इसका भी होल ट्वाइस होता है, CHO CrOHCl2. This is chromic oxide. This is chromic oxide. This is not supposed to be chromic oxide. ये क्या हो सकता है इसमें? chromic oxide नहीं, chromium complex ना, chromium complex COMPLEX complex. इसको हाइड्रोलिसिस किया जाए तो H3O प्लस के प्रेजेंस में ये बनेगा तुम्हारा CHO बेंजाल्डिहाइड. अस्तगफिरुल्लाह, बेंजाल्डिहाइड CHO. इसी को तो बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन. बाकी तो सब सेम ही है. अस्तगफिरुल्लाह. The chromic oxide CrO3, toluene or substituted toluene. Okay. Substituted toluene or substituted toluene is converted to benzylidene. Oh भाई साहब, benzylidene diacetate. इसका नाम है, इतना खतरनाक नाम भाई साहब. ओ भाई साहब, benzylidene diacetate. benzylidene diacetate. ये तुम्हारा बेंजीन हो गया, benzylidene CHO COOCH3. Okay. benzylidene diacetate H3O plus benzaldehyde. ये तुम्हारा है CH3CO. ओके, ये तुम्हारा ना एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड. ये होगा तुम्हारा क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड. OXID, क्रोमिक ऑक्साइड. या अल्लाह, I need help. Chromic oxide. Astaghfirullah. Chromic oxide. It's okay, ma. It's okay. Chromic oxide. Acid anhydride. Chromic oxide. Acid anhydride. Benzylidene diacetate. No, I don't want to go there. Benzylidene diacetate. फिर क्यों सोच रही? आई थिंक मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ना जाना है वहाँ पर, मुझे तो नहीं जाना. क्रोमिक ऑक्साइड, हॉरिबल प्लेस. क्रोमिक ऑक्साइड, एसिड एनहाइड्राइड, benzylidene diacetate, benzaldehyde, CHO group, okay, H3O plus CHO group. Okay. CH3CRO3 plus CH3CO2. Use of chromic oxide. CrO3, toluene or substituted toluene is converted to benzylidene diacetate on treating with chromic oxide in acetic anhydride. I don't think कि 2 फोन में वो लोग करने देते हैं लॉगिन, पता नहीं. यूज ऑफ क्रोमिक, क्यों सोच रही हो? Use of chromic oxide CrO3, toluene or substituted toluene is converted to benzylidene diacetate on treating with chromic acid OCOCH3. Hold please.
ओके, उसको हाइड्रोलिसिस करने पर सी जो बेंजाल्डिहाइड मिलता है क्रोमिक ऑक्साइड की वजह से. Maybe I keep on saying this word na, maybe CrO3 is chromic oxide by oxidation with chromic oxide. Use of chromic oxide, CrO3. Use of chromyl chloride. Oxidation of methyl benzene. Okay. Oxidation of methyl benzene with, okay, by using CrO3, that is chromic oxide. CH3CO, CH3CO twice, 273 to 283 Kelvin. I don't like that, women. Stop talking to yourself. CH O C कितनी प्यारी आवाज है जो भी बाहर बोल रही है. Benzylidine diacetate. Benzylidine. 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 Benzylidine diacetate. Benzylidine diacetate. Diacetate. Benzylidine diacetate. Benzylidine diacetate. Benzylidine diacetate. Benzylidine. Learn Eid Mubarak. हमारा घर में भी आ जाना. वो नहीं आ सकती अलियाना तुम्हारे घर पे. अलियाना लिव्स इन पाकिस्तान. लेकिन फिर भी तुमने उसको ईद मुबारक बोला ना, मैं उससे बता दूंगी जब वो आएगी. ओके. बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, CHO COCH3 होल्ड वाइज. ओके. CrO3 CH3CO होल्ड वाइज. एसिड एनहाइड्राइड CHO C डबल बॉन्ड O. ओके. तुम्हारा ना यहाँ पर ये जो एसिड एनहाइड्राइड का ग्रुप है 2 बार आके अटैच होगा टॉल्विन की कार्बन पर. टॉल्विन के बाहर वाले कार्बन पर. तो बताओ कैसा होगा तुम्हारा स्ट्रक्चर. यहीं पर बना देती हूँ. एक तो तुम बनाओ बेंजीन रिंग और उसके बगल में जो CH3 है उसमें से बस CH करके 2 ग्रुप डालोगी यहाँ पर. OCO. यहाँ पर CH3 होगा. CH3 C डबल बॉन्ड O होगा ना, यही होगा. फिर इस साइड से भी ये होगा C डबल बॉन्ड O CH3. 2 बॉन्ड ब्रेक होके ना अलग अलग जा रहा है यहाँ पर. इसको तुम अगर हाइड्रोलिसिस करोगी तो क्या बनेगा H3O प्लस के साथ. तो यहाँ पर ना बेंजाल्डिहाइड बनेगा. CHO बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड. ओके. CrO3 chromium trioxide CHO एंड एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में
CHROMIC, chronic oxide, Cl3. बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट है इसका नाम, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। इटार्ड रिएक्शन तुम्हारा किसके प्रेजेंस में होगा? क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा। By side chain chlorination, followed by hydrolysis by side chain chlorination. Side chain chlorination, CHCl2, उसको हाइड्रोलिसिस करोगी तो CHO बनेगा, बेंजाल क्लोराइड, बेंजाल क्लोराइड। वाह भाई साहब वाह। Side chain chlorination of toluene gives benzyl chloride. Side chain chlorination of toluene gives benzyl chloride, which on hydrolysis gives benzaldehyde. Side chain chlorination of toluene, क्लोरिनेशन गर्दाखेरि नि बेन्जाइल क्लोराइड निक्लिन्छ, CHCl2 हुन्छ त्यसको फर्मुला। This is a commercial method of manufacturing. Okay, this is the commercial method for preparation of or manufacturing of benzaldehyde. Commercial method. Chloride, benzyl chloride, 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius. 74, 75, 76, 77, 78. Okay, 10 degrees Celsius. Another. Benzaldehyde, okay, 373 Kelvin, 100 degrees Celsius. By Gutterman-Coates reaction, when benzene or its derivatives is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous, okay, and hydrogen chloride, HCl, hydrogen chloride, astaghfirullah, hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminum. When benzene or its derivatives is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride, when benzene or its derivatives, इसको derivatives बनी जाती है, okay, treated with carbon monoxide or hydrogen chloride, CO HCl, in presence of anhydrous aluminum AlCl3, okay, Lewis acid, anhydrous aluminum catalyst, anhydrous aluminum chloride and cuprous chloride, CuCl. ओ भाई साहब या अल्लाह, मुझे ये समझ में नहीं आता, वो एम्बैरेसिंग इंसिडेंट याद आ रहा है। क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड बेंजाल्डिहाइड बनेगा बेंजीन से। कि दिस रिएक्शन इज नोन एज गटरमैन-कोच रिएक्शन। त्यो रिएक्शनको नाम चाहिँ के थियो नि? सानो मेरो थियो हो, गटरमैन रिएक्शन। I'm pretty sure उसका नाम गटरमैन रिएक्शन ही था, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन, देखो तो गटरमैन रिएक्शन, लेकिन इसको गटरमैन-कोच रिएक्शन। कितना सारा आ गया, रोजनमंड आ गया, स्टीफन रिएक्शन आ गया, इटार्ड रिएक्शन आ गया, और ये गटरमैन-कोच रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में 1 रोजनमंड, 2 स्टीफन, 3 is your Itard, and 4 is your Gutterman-Koch reaction. Carbon monoxide with HCl in presence of anhydrous aluminum chloride and cuprous chloride, CuCl, cuprous. क्यूप्रस क्लोराइड, राइस खा के आई है। क्यूप्रस क्लोराइड में CHCl3, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजाल क्लोराइड, बेंजाल क्लोराइड, गटरमैन-कोच रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन ना।
chromium complex बनेगा cuprous chlorides, chromium chromyl chloride, CrO2 chromyl chloride. स्लॉट 1 कंप्लीट हो गया है। मुझे कितना भूख लग रहा है ना आदेश, तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम बोलोगे कि पढ़ो तो मैं पढ़ूंगी, लेकिन तुम लिखो ना ब्रेक प्लीज। मैं राइस लेके इधर ही आऊंगी। राइट ब्रेक। मेरा तो 1 स्लॉट कंप्लीट हुआ ना भाई। 11 को ब्रेक ही बोल रहा है। तुम्हारा तो स्लॉट 2 चल रहा है ना, मेरा तो स्लॉट 1 है ना। और मैं अभी खाना खाते खाते ना चेस खेल सकती हूँ, अगर तुम्हें चेस खेलना है तो। ओ तो फिर तुम्हारा एक स्लॉट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा तो एक हो गया ना, मैंने थोड़ा पहले किया ना। आई एम सो सॉरी फॉर वेज पीपल, ओके। मैं तो नॉन वेज हूँ ना। नॉट बैड। Anyone who wants to play chess?
They are couples. The woman is 25 years old and this man is around. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hi Raj. It seems like appearance से ऐसा लग रहा है कि वो sugar daddy है. But they are married. This is definitely not good. If she is happy वो अलग बात है फिर तो we can't say anything. But देख के अच्छा नहीं लग रहा है.
Shit. Oh, hi, hello. Hi, Naitik.
नो सरनी। तुम्हारा नाम क्या है? सरनी है या फिर सरन है? सरन, जो भी हो। नहीं नहीं, तुम गलत हो। हाय शालव, हाय शुभम। मेरा भी फेवरेट है राइस, तुम्हारा भी फेवरेट है क्या? सेम पंच। आहा आदेश, तुम्हें शर्म आई? उस दिन मैं तुमसे 5 बार हारी थी, मुझे तो शर्म नहीं आई। ये क्या है? गे जैसे लग रहे हो शुभम। वैसे मुझे लगा ही था तुम वहां पर फंसोगे, क्योंकि ना तुम कब से अपना पॉन प्रमोट करने में लगे थे ना, तो मुझे लगा कि तुम नहीं खाओगे रुक को। वैसे मैंने भी काफी सारी मिस्टेक की। तुम मेरे क्वीन भी विन कर सकते थे, लेकिन तुमने पता नहीं अपनी वो पॉन तो वो भी नहीं किया, क्वीन में भी प्रमोट नहीं हुआ, फिर भी उसको पुश करने में लगे थे तुम। गॉड नोज क्यों। एक्सक्यूज मी। तुमको देख के नीट के स्टडी कर रहे हो ऐसा क्यों लगता है लोगों को, है ना? हाँ वही तो, नाइस क्वेश्चन।
शायद ना बुक की वजह से। एनसीईआरटी ना वैसे ये ब्लेंडर पे ब्लेंडर, हाँ हाँ। चल इसने मिस किया शायद। हाँ वो मैंने नहीं किया था, क्या बोलते हैं, क्वीन को बाहर, किंग को ही निकाला था कि मुझे लगा उस साइड पे क्वीन है ना, मैंने टच कर दिया, फिर बाद में देखा तो मुझे देखा कि वो किंग बाहर निकल के आया। ओ हाँ। ओ मैंने नहीं देखा वो। Oh, I'm too dumb. Oh. वो मेरा क्वीन वहाँ, हाँ मुझे पता है, यहाँ पर जा सकता था मेरा क्वीन, मुझे लग ही रहा था।
पोजीशन कितनी इक्वल हो गया था। देखो तुम मेरा ना क्वीन ले सकते थे यहाँ से। रुक को अगर तुम उस कॉर्नर पे ले जाते ना तो क्वीन के लिए बाकी कोई मूव करने की जगह ही नहीं थी। अगर मैं नीचे भी मूव करती ना तो तुम्हारा बिशप खा लेता। इस साइड के अगर मैं भी तुम्हारा रुक ले लेती तो भी वो दूसरा वाला रुक था तुम्हारे पास। इक्वल पोजीशन होने वाला था। आई थिंक तुम्हारा ज्यादा भी होने वाला था अगर तुम अच्छे से खेलते तो। मूव 23 के बाद। ठीक ठीक ठीक। चेकमेट कैसे होता गवार? मैंने नहीं दिखाई दे रहा है कैसे हो रहा है। देखो वो यहाँ पर आ गया ना तो मैं इसको वो करूँगी। ओह हाँ हाँ। देखो ये यहाँ पर आएगा ना तो मैं तो वहाँ पर जा ही सकती हूँ ना। कहाँ वो वहाँ पर है। मैं नहीं सोच सकती इतना आगे का।
चार बार ब्लंडर करने के बाद भी जीत लिया। मेरे एक रुख तो तुमने आगे ही ले लिया था, क्या 2 रुख होते। मैंने बहुत अच्छा नहीं खेला, मैंने 4 बार ब्लंडर किया था, तुमने सिर्फ 3 बार जितना, 2 बार जितना ही किया। अलियाना तुम्हें ना वो इफ्ती ने ईद मुबारक बोला था। यार पोमोडोरो क्या है? पोमोडोरो में ना तुम सर्टेन आवर्स पढ़ते हो, सर्टेन आवर्स की ब्रेक लेते हो। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक स्लॉट ना और फिर ब्रेक ले लिया, अब फिर हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होने वाला है, तुम पढ़ने के लिए आ सकती हो, लेकिन मैं पानी लेके आऊंगी। एक्सियो पर्सनल लोन, क्वीन पहले ही गई, उससे बड़ा ब्लंडर क्या ही हो सकता था। तो ऐसा तो मेरे भी तो क्वीन तुम टेक कर सकते थे ना, तो तुमने वो कैसे नहीं देखा? स्लॉट 2 लिखो तो, स्लॉट 2 60 मिनट करके। तो मैंने क्या बोला? खैर तुमने कुछ नहीं बोला, तुम थी ही नहीं जब उसने बोला। मैंने बोला कि अलियाना अभी नहीं है, जब वो आएगी तो मैं उसे कह दूंगी। तो अब तुम्हें बोलना होगा कि तुम्हें भी ईद मुबारक इफ्ती। अरे मैं क्या कर रही हूँ? मैं मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं लाइव सेशन में या फिर यूट्यूब में आके बहुत ही ज़्यादा क्यूपिड प्ले करती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। चलो कोई ना। क्यों प्रेस क्लोराइड है ये? क्यूप्रस क्लोराइड एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड। वो तो तुम्हें ना दावत पे भी बुला रहा था, फिर मैंने बोला कि वो पाकिस्तान पे रहती है, नहीं आ सकती। तुम्हें ना सुन के गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे ना वो खाने का दिल कर रहा है, कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है। ओके ओके। छोड़ दे, पढ़ ही लेते हैं, वैसे खा ही लेते हैं ना, मुझे खाने का ही दिल करता है। पढ़ाई इतना, खाना इतना होता है मेरा हमेशा। ट्रीटमेंट ऑफ एसाइलराइड विद डाई अल्काइल केडियम। डाई अल्काइल केडियम, कैडियम, कैडमियम है कि केडियम? इट्स कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल
Okay, good luck, Aliana. Dialkyl cadmium. Dialkyl cadmium. Dialkyl. हाँ, थोड़ा तुम्हारा समझ में नहीं आता मुझे। मुझे मेरे अलावा थोड़ा दूसरों की हिंदी कम ही समझ में आता है वैसे तो मसाइल फ्लोराइड तो मैं वो जो हिंदी वाले लोग हैं ना वो तो है ना उनसे ट्रांसलेशन करवा लेती हूँ। क्या दूँ? स्लॉट 2? ओके, गुड लक। ट्रीटमेंट ऑफ असाइल फ्लोराइड है, असाइल फ्लोराइड। असाइल फ्लोराइड विद डाई अल्काइल कैडमियम prepared by reaction of cadmium chloride with Grignard reagent. ओह, ये तो reagent preparation of reagent. असाइल फ्लोराइड with डाई कैडमियम reaction of cadmium chloride. Cadmium chloride, this is Grignard reagent. Grignard reagent. Grignard reagent cadmium chloride. Grignard reagent cadmium chloride, this is alkyl dialkyl cadmium. Acyl fluoride with dialkyl gives ketone okay, CdCl2. Treatment of acyl fluoride with dialkyl cadmium dialkyl R2CD. Treatment of acyl fluoride or C11OCl. Also or the C11O CdCl2. CdCl2. Cadmium chloride. Cadmium chloride. Cadmium chloride. Prepared by cadmium chloride. Grignard reagent. Cadmium. Cadmium chloride. So cadmium chloride. Cadmium chloride. Cadmium chloride. Grignard reagent. Okay, cadmium chloride. Again, it's okay. Grignard reagent. No. R2 dialkyl cadmium. Dialkyl cadmium. Two mgHCl. 2 mgHCl. 2 mgHCl. ओके, कीटोन बनने को जाओ. एक ई कार्ड राशि सिल्वर कर्टन रॉड ब्ला ब्ला ब्ला. बाय अलियाना. अच्छे से बनाना रील्स. फ्रॉम नाइट्राइल्स. ओके, फ्रॉम नाइट्राइल्स. तेरे बिन treating a nitrile or CH2 C and then okay or CNO in the okay treating nitriles with Grignard reagent C6H5 MgBr followed by hydrolysis to yield a ketone ethyl CH3CH2 C and MgBr. Propiophenone phenylpropanone प्रोपियोफेनॉन किस एंगल से? ओके, प्रोपियोफेनॉन ही तो है ये. वो तुम्हारा एसिटोफेनॉन होता ना वो वाला. एसिटोफेनॉन 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 सी डबल बॉन्ड CH3. ओके, सी डबल बॉन्ड CH2. एसिटोफेनॉन
Propiophenol, C double bond O, CH2, CH2, propiophenol, acetophenone and propiophenol. Acetophenone and propiophenol, acetophenone and propiophenol. Acetophenone and propiophenol, acetophenone and propiophenol. Treating a nitrile with Grignard reagent followed by hydrolysis yield. Propiophenol. C double bond O N है ना MgBr हुन्छ R ट्रान्सफर हुँदैछ नि त MgBr के यहाँबाट चाहिँ नि प्लस र माइनस हुन्छ कि यहाँनिर तेरे बिन ओ माय गुडनेस मैंने फिर से आज भी इसमें वो कर दिया तेरे बिन ये वाला सॉन्ग मुझे अच्छा लगता है प्लस ओके तो वो यहाँ पर से तुम्हारा माइनस रहेगा ना C6H5 कितना अच्छा सॉन्ग है ना कम ऑन इमा स्टडी ether ROR hydrolysis from benzene substituted okay from nitrile से एक बार हुआ उससे पहले तुम्हारा किससे हो रहा था वो असाइल वाला ग्रुप से ना from acyl chloride हम पे थोड़ी दया तो कर हम नन्हे बालक है from benzene or substituted benzenes. When benzenes or substituted benzene is treated with acid chloride in presence of anhydrous aluminum chloride, मर जाएगी तू लेकिन कोई बात नहीं मैं मरने के लिए तैयार हूँ एक बात तो है when benzene is when benzene focus when benzene or substituted benzene is treated with acid chloride बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मैं अभी ना पागल लड़की की तरह ना बिहेव कर रही होंगी लेकिन मैं पागल नहीं हूँ हाँ मेरे दिमाग में बस चीज़ें चल रही है बातें when benzene or substituted benzene is treated with acid chloride in presence of anhydrous aluminum chloride Lewis acid थोड़ा हंस लेती हूँ I'm so sorry. From benzene or substituted benzene, when benzene or substituted benzene is treated with acid chloride in presence of anhydrous aluminum chloride, it affords the corresponding ketone. This reaction is known as Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. Alkylation भी होता है acylation. Friedel-Crafts acylation. बेंजोफेनॉन बोलते हैं उसको बेंजोफेनॉन डाइफिनाइल मिथेनॉन
Diphenyl methanol. Diphenyl methanol. Phenyl, diphenyl methanol. Diphenyl methanol. Diphenyl methanol. Diphenyl methanol. डाइफेनाइल मिथेनॉल. डाइफेनाइल मिथेनॉल. इसके बगल में क्या होता है? इसका ये है IUPAC में बेंजोफेनॉन बोलते हैं इसको. बेंजोफेनॉन. 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 PHENON. फेनॉन. फेनॉन. बेंजोफेनॉन. बेंजोफेनॉन. डाइफेनाइल मिथेनॉल. बेंजोफेनॉन. बेंजोफेनॉन. ओके. बेंजोफेनॉन. हाँ वो वाला पहले कर लेते हैं ना. बेंजोफेनॉन. 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 Diphenyl methanol. Benzophenone. Diphenyl methanol. Benzophenone. Diphenyl methanol. Benzophenone. When benzene or substituted benzene is treated with acid in presence of anhydrous aluminum chloride, it affords the corresponding ketone. This reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction. Okay. When benzene or substituted benzene is treated with acid chloride in presence of anhydrous aluminum chloride, जो चाहिँ लुइस एसिड हो. ओके. बेन्जिनमा तिमीले असाइल क्लोराइड एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक. असाइल क्लोराइड. बेन्जिन or substituted benzene. Benzene or substituted benzene is treated with acid chloride in presence of anhydrous aluminum chloride. It affords the corresponding ketone. हाँ, but I don't care. Ketone. This reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction. CH3 होता तो इसका नाम एसिटोफेनॉन होता. फिर उसका नाम होता फिनाइल इथेनॉन. फिनाइल इथेनॉन. फिनाइल. फिनाइल इथेनॉन. फिनाइल इथेनॉन. Not given. From nitriles, from benzene or substituted benzenes. Friedel-Crafts acylation from benzene or substituted benzene. Okay. From nitriles. ओके. बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में तो तुम एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक असाइल क्लोराइड यूज़ करोगे ना. किसके प्रेजेंस पे नहीं पता. ऊपर तो ईथर यूज़ किया था. यहाँ पर क्या है? एनहाइड्रस. ओके. ये तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना लुइस एसिड. एनहाइड्रस ElCl3 कैटलिस्ट है. एनहाइड्रस ElCl3 लुइस एसिड कैटलिस्ट. हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है. फ्रम नाइट्रल्स. नाइट्राइल्समा चाहिँ नि तिम्रो के हुन्छ भने त इथर सल्भेन्ट इथर हुन्छ हो. त्यहाँदेखि चाहिँ तिमीले गिग्नार्ड रिएजेन्ट युज गर्छौ. तर यहाँनिर तिमीले एरोमेटिक वाला C6H5MgBr वाला युज गर्छौ. ओके. C6H5MgBr. यसमा तिम्रो नि यही हुन्छ. उतानिर डबल बोन्ड हुन्छ हो. सिङ्गल बोन्ड यहाँनिर C6H5 आउँछ मुनिपट्टि. यहाँनिर चाहिँ MgBr चिप्केको हुन्छ सर्टेन टाइमको लागि. उसको बादमा फेरि हाइड्रोलिसिस गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई के दिन्छ? कीटोन दिन्छ. डबल बॉन्ड वो बनिन्छ नि त यहाँनिर. देखियो. ये तो सब कुछ रिमूव हो जाएगा ना हाइड्रोलिसिस करने के बाद. ये रिमूव. ओके. C6H5 ये भी एज इट इज. हाइड्रोलिसिसमा यो लिभ गर्छ ल. NMgBr गयो. असाइल क्लोराइडमा तिम्रो के हुन्छ भने असाइल क्लोराइड Mg or Mg. Okay. CdCl2 plus Mg or MgBr.
indigo. Give not reason plus 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 If you miss the train I'm on, dialkyl cadmium. Beta alkyls and the cadmium. The alkyl use it 2 नहीं हुन्छ 2 R MgX के हुन्छ dialkyl cadmium. This is dialkyl cadmium. Astaghfirullah. Please help me. Help me for what? I don't know. RC double bond. O. Cadmium dichloride. Cadmium chloride. From acyl chloride, like acid chloride. From nitriles, from benzene or substituted benzene. Hi Shibam. Physical properties. The physical properties of aldehyde and ketone are described as follows. Methanol is a gas at room temperature. Methanol is gas at room temperature. Okay, methanol. HCHO is gas at room temperature. Ethanol is a volatile liquid. Ethanol. Volatile liquid. Okay. Other aldehyde and ketones are liquid or solid at room temperature. Other aldehyde and ketones are liquid or solid at room temperature. Methanol is gas at room temperature. Okay. Ethanol is a volatile liquid. Other aldehyde and ketones are
solid or liquid in room temperature, solid या फिर liquid. The boiling point of aldehyde and ketones are the boiling point of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbons and ether of comparable molecular mass. The boiling point of aldehyde and ketone are higher than hydrocarbons and ether of comparable molecular mass. Okay. Boiling point of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbons and ether comparable molecular masses. It is due to weak molecular association in aldehyde and ketone arising out of dipole interaction. पता नहीं, आप ही जाने वाला बता. It is due to weak molecular association in aldehyde. Weak molecular association in aldehyde. It is due to weak molecular association in aldehyde and ketone arising out of dipole interaction. Okay. Methanol is a gas at room temperature. Ethanol is a volatile liquid. Other aldehyde and ketones are liquid or solid at room temperature. Other aldehyde and ketone are liquid or solid at room temperature. The boiling point of aldehyde and ketone are higher than hydrocarbons and ether of comparable molecular mass. The boiling point of aldehyde and ketone are higher than hydrocarbons and ether ROR, okay, of comparable molecular masses. It is due to weak molecular association in aldehyde and ketone arising out of dipole interaction. Molecular association, okay. Also, their boiling points are lower than those of alcohol of similar molecular masses, okay, due to the absence of intermolecular hydrogen bonding. Alcohol BP comparable mass. Aldehyde ketone ether hydro due to absence of intermolecular hydrogen bonding in CO and CH. Boiling point is lower than those of alcohol. The boiling point is lower than those of alcohol and of similar molecular masses due to absence of intermolecular hydrogen bonding. Astaghfirullah, Allah, I need your help. Due to absence of intermolecular hydrogen bonding. The following compounds of molecular masses 58 and 60 are ranked in order. Astaghfirullah. The following compounds of molecular masses 58 and 60 are ranked in order of increasing boiling point. Butane 58, 60. Methoxymethane. Alcohol, then ketone. कीटोन पे ज़्यादा होता है जैसे कि कीटोन then aldehyde. Boiling point
of ketone, ketone, ketone within CHO, aldehyde. Boiling point of ketone is greater than same molecular mass. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं, एन ब्यूटेन, मिथोक्सी इथेन, प्रोपेनॉल, एसीटोन, कुछ भी दिमाग मत खाओ मेरा प्लीज। आई नीड, निकल जाओ मेरे दिमाग से, सारे थॉट्स बाहर निकल जाओ। एसीटोन एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल लिखता भी तो 329, ओके 322 प्रोपेनॉल रा एसीटोन। हर एक चीज़ पे हर एक हर बार हर चीज़, मतलब क्या बोल सकते हैं, बोलिंग पॉइंट हर टाइम ना अलग अलग दे देते हैं ये लोग। मुझे गुस्सा ही आ जाता है। नाम कौन पढ़ सकता है यार, फैमिली से ही पढ़ना इतना सारा। अल्कोहल, फिर उसके बाद कीटोन, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, फिर उसके बाद ईथर ROR, उसके बाद है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन। The lower members of aldehyde and ketones such as methanol and ethanol and propanol are miscible with water in all proportion. Solubility की बात कर रहे हैं ये लोग। Solubility. The lower members of aldehyde and ketones such as methanol, ethanol, lower members of aldehyde, lower member of aldehyde and ketones such as methanol, ethanol, astaghfirullah, propanol are miscible with water in all proportions because they form hydrogen bond with water. Astaghfirullah. ये कीटोन का दिखाया है इन लोगों ने। However, the solubility of aldehyde and ketone decreases. Okay, यहाँ पर इसका दिखाया है, मैं मिथानॉल का दिखा देती हूँ। यहाँ पर मिथानॉल एंड इथेनॉल, CH3 मिथानॉल ना, ओके CH2 CHO होता है ना भाई। CHO H2O, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। छोड़ो भाई साहब, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। शट अप इम्मा। इसको AND बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक नेगेटिव थर्ड। intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding. Absence of intermolecular hydrogen. दो मॉलिक्यूल ऑफ CHO के बीच नो बॉन्डिंग।
ये तो समझ में आता है दूसरे में सी डबल बॉन्ड होगा, लेकिन सी देखो डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर सी एच थ्री ना, इसका एच है तो डबल बॉन्ड ओ, ये तो कर सकता है। एल्डिहाइड क्यों नहीं स्टाइल करता इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? However, the solubility of aldehyde and ketone decreases rapidly. Okay, solubility of aldehyde and ketone decreases rapidly with on increasing the length of alkyl chain. Alkyl chains को increase करेंगे, decrease हो जाएगी solubility. The aldehyde and ketone are fairly soluble in organic solvent like they are. Okay, aldehyde and ketone are soluble, fairly soluble. Soluble in organic solvent like benzene, ether, methanol, chloroform, etc. Benzene, ether, methanol, and chloroform, etc. Hydrogen bond with water. हाँ, कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. The lower aldehyde have sharp, pungent odor. Lower aldehyde have sharp, pungent odor. Sharp, pungent odor. Okay. As the size of molecule increases, the odor becomes less pungent. Odor becomes less pungent and more fragrant. Okay. Sano, small chain वाला aldehyde चाहिए, इसको चाहिए मतलब pungent odor. Lower aldehyde, pungent odor. As the size of molecule increases, the odor becomes less pungent, more fragrant. In fact, many naturally occurring aldehyde and ketone are used in blending of perfumes and flavoring agents. Perfume or flavoring agents now one there is. Okay. Pungent, sharp pungent odor. Odor becomes less pungent, more fragrant. Blending of perfumes and flavoring agents. Okay. Can we see intermolecular hydrogen bonding in aldehyde? Yes, aldehyde can participate in intermolecular hydrogen bonding but not with themselves. Intermolecular hydrogen but not with themselves. Okay, because aldehyde lack a hydrogen atom. Attached to like okay, intermolecular. हाँ तो यहाँ पर क्यों लिखा है कि intermolecular hydrogen bonding नहीं होता है? Pagal NCERT, it is due to the weaker molecular association in aldehyde. It is due to the weaker molecular. Okay, methanol is a gas at room temperature. Ethanol is volatile liquid. Other aldehyde and ketones are liquid or solid at room temperature. The boiling point of छोड़ो ना. The boiling point of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbons and ether of comparable molecular mass. It is due to weak molecular association of aldehyde and ketone arising out of the dipole-dipole interaction. Also, the boiling point are lower than the alcohol of similar molecular masses due to absence of intermolecular hydrogen bonding. अबे क्या बोलना चाह रहा है? Intermolecular hydrogen वो है aldehyde पे साला पागल NCERT. इंट्रामोलिकुलर लिखना चाहिए था ना, क्यों लिख दिया एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Hi, can you explain the physical properties of aldehyde, ketone and carboxylic acid?
Page number 357. Hydrogen bonding, the NCERT class 12 chemistry. Aldehydes and ketones, they have higher boiling point than non-polar alkanes and ether of similar masses due to dipole-dipole interaction. However, they lack OH bond, so they cannot form hydrogen bond with themselves. उन्होंने ना मुझे बताया कि लाइक पॉइंट्स देके लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है की लिख दिया मैंने की अल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड एंड एल्केन ओके ईथर का ज़्यादा दिया है ना उसमें Testing the bonus it's you. I'll just let you. Baggo. Buggy. Baggo. फिर हाइड्रोकार्बन ओके मिनिमम बेसिस पे चल कोई बात नहीं तुम कर सकती हो ना कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बाद अल्कोहल फिर कीटोन फिर एल्डिहाइड ओके टू मॉलिक्यूल ऑफ ओके they have higher boiling point than non-polar alkanes. Lack of OH bond, so they cannot form hydrogen bond with themselves. मैं थोड़ा समझ गई शायद These things I wanna say to you, but I'll just let you be. मेरा भी चार्ज ज़्यादा नहीं है Oh, it's like no, they don't look similar at all. Oh,
कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद ईथर, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स. ओके. Absence of intermolecular hydrogen bond. Intermolecular due to the absence of A, B, S, C, and C, absence of OH bond. Due to the absence of OH bond. Absence of OH bond. Absence of intermolecular hydrogen bond. C double bond OH था, तो डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी बना हमसे. ओके, कीटोनमा त यिनीहरूले गरिरहेको छ अन्त तिनवटा बन्ड. कुछ समझ में नहीं आ रहा. Ketone and aldehyde don't have intermolecular hydrogen bond, but they form hydrogen bond with water. How it is possible? Ketones and aldehydes can form hydrogen bonds with water due to their oxygen atoms, which are electronegative and have lone pairs, even though they don't have the necessary OH bonds for self-bonding. In ketone, the carbonyl oxygen double bond C double bond O is highly polar. The oxygen atom hogs the shell, giving it a strong polarity, negative charge. When mixed with water, act as a powerful magnet. Hydrogen bond. The oxygen lone pair of electron breeze with the water molecule. This is so annoying. Why do aldehyde and water don't form hydrogen bond? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वहाँ पर क्या है? Arrange the following molecule in increasing order of the boiling point. Hydrocarbons. This is ether. चार पाँच छः. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Okay.
The molecular mass of this compounds are in a range of 70%. Butan 1 all molecules are associated with extensive intermolecular hydrogen bonding. Okay. Since the only butan 1 all molecules are associated due to extensive intermolecular hydrogen bonding, therefore the butan 1 all would be the highest. Butanol is more polar than ethylene. Therefore, the intermolecular dipole-dipole attraction is stronger in the former, and pentane molecules are only weak. So, increasing quantity of boiling point of the What is the difference between hydrogen bond and intermolecular hydrogen bond? Okay. What is the difference between intermolecular hydrogen bond and hydrogen bond? Hydrogen bond is a general attractive force. It can be broken down into two types. Intermolecular hydrogen bonds occur with separate molecules, while intramolecular hydrogen bonds happen within a single molecule. Hydrogen bond is simply a general attractive force between a hydrogen atom and a hydrogen bond is general attractive force between a hydrogen atom like nitrogen and attractive force between a hydrogen atom and highly electronegative atom like intramolecular hydrogen bond occurs within a single molecule. मुझे क्या पता इसका करेक्ट आंसर क्या होता था शायद मुझे नहीं पता Intramolecular bonds, on the other hand, happens internally because the interactions are always Bonding happens between different molecules, while intramolecular bonding occurs within a single molecule.
Simple aldehyde chemical reaction. Since aldehyde and ketone both possesses the carbonyl functional group, they undergo similar chemical reaction, nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. So, all things. A nucleophile attacks the electrophile carbon atom of the polar carbonyl group from a direction approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbital of carbonyl carbon. The भागो भागो कहाँ भागो केमिस्ट्री ओके
It's a beautiful night. I think I wanna marry you. Oh baby, song. I can't move on, baby.
बी बी सो इसको खोलो भाई, इसको नीचे निकालो। कड़वा ओ बेबी सो नारुतो चेकमेट। जीत गई ना मैं। आसपास कोई मंदिर या स्कूल? नहीं स्कूल है, मैं दिखाती तो हूँ रोज। ये कैसा क्वेश्चन है? मेरे घर के सामने है स्कूल। शिवम गुप्ता, खेलोगे चेस एक मैच? लिखो तो, तुम्हारा आईडी मुझे नहीं पता ना। लिखो लिखो। स्मॉल लेटर HUTFBIGRDFGG विदाउट स्पेस, ओके। कोई चेस खेलता है तो जल्दी आओ ना, चेस आईडी chess.com से। HUTFBIGRDFGG। शिवम गुप्ता, आर यू देयर? भी नहीं है, मैं किसके साथ खेलूं? क्लियर फ्रेंड आदेश देशमुख। No, he is not online. Nishant is there. No, he is also not online. Anyone who wants to play chess? जल्दी बोलो ना, मेरा पोलिनोमियल भी करना है वो अभी तो। You people are so annoying. कोई भी नहीं खेलना चाहता है क्या? फिर मैं ही खेल लेती हूँ, हाँ, दूसरा मैच किसी और के साथ। रैंडम गेम। Someone from Bangladesh, Brian X. Playing with Brian X. जानू कैसे लोग थे जिनके प्यार से प्यार मिला। ओह वाओ, तुम इतनी खतरनाक कैसे हो गए? लो, तो तुम आ सकते हो। ओह वाह, लेकिन मैं ये मूव पहले भी देख चुकी हूँ, तो इसके लिए बेस्ट यही होगा कि मैं क्वीन निकालूं। I have seen people doing this. Nice. ये सेम मूव मैंने देखा है लोगों को खेलते हुए। पर तुम एक पॉन और एक वो तो जीत सकोगी ही इसमें। Okay, so
दैट वाज नॉट बेस्ट आइडिया है ना, किंग को हटाने वाला। एक को लूज कर सकते थे मैं। तो नुबरा निकला, लोमड़ी कहीं का। ये तो चेकमेट, चेकमेट है भाई का, चेकमेट, चेकमेट। ओह नहीं था। वाओ वाओ वाओ, नाइस नाइस। मैं कुछ भी नहीं जीत पा रही आज तो। मटेरियल्स लूट लेती हूँ जी भर के। चेक। अरे क्या कर रहा है, कैसा खेल रहा है ना। बिशॉप लेके आना था ना यहाँ पर, रुक लेके आ गया, बस ब्लॉक ही किया नाम पे। मैं भी इसको यहाँ पर चेकमेट नहीं, वो वापस से लेके आता। इतना भोला थोड़ी है वो। मुझे लगा इसको तो आज 2 मिनट में ही चेकमेट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैसा खेल रहा है ये, कितना गंदा खेल रहा है ना। चलो अब तो मैं जीत ही गई वैसे भी। ये रुक को ऊपर लेके आएगा, फिर मैं एक और करूंगी चेकमेट। इतना अच्छा प्लेयर हो गई मैं। वापस से जीत गई। ब्राइन एक्स, ओके। इफ यू वांट टू प्ले देन ओके। व्हाट इज दिस। इतना हल्के में नहीं लेने का। तुम सही। अबे ओ हलकट, इतने हल्के में नहीं लेने का। ये तो इतना मासूम भी नहीं है जितना तुम सोचती हो। बोला था ना मैंने। ओह शिट, आई टोल्ड यू। I told you, I told you, I told you, I told you, I told you. Some. Rest some. ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग पीसेस ट्रेड करते हैं। ओ रेस्ट सम ओ सम। ओह तुम तो बेटर देन एक्सपेक्टेड निकले। ये यहाँ पर आया तो मेरा तो होगा बैंड बचे। यहाँ पर आएगा तो भी इसका मैं निकाल दूंगी हवा। Oh baby, it's so I can't move on. Okay, पहले तो स्लो स्टेप।
Nice, nice. Shut up. Oh, baby. Just some. Chalo. That's his choice ना कौन से atom से आना है. It's completely your choice. It's completely your choice. Wow, Imma. Nice. Oh, no, not very nice. हाँ, ये तो जाएगा यहाँ पर आया तो कहेगा यहाँ पर. No. So just hit him. Nine. Yo. I shouldn't have done that, है ना? It's fine, bro. It's fine. So that was a bad move. Definitely. Now he'll move now. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Knew it. I knew it. सोए सोए पलकों पे चल के मेरे सपनों की खिड़की पे आ गया. आते जाते फिर मेरे सपना. बहारा 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 पहली. I can't move on. Oh, baby. थम्स अप पीने का ब्राइन भाई. चिंता नहीं करने का. तुम भी सोचती हो. तुम भी सोचती. छोड़ के चली गई क्या?
छोड़ के जाना ही था तो रीमैच के लिए क्यों बोला, है ना? इट्स जस्ट अ फ्रेंडली मैच, चिंता नहीं करने का। शट अप, शट अप। लगा ही था ये ऐसा ही कुछ हरकत करेगा मेरे सामने आके। वो तो वहां पर मूवी करेगा तो क्या ही फायदा ना, तो अगर नहीं भी करूंगी तो भी तो क्या फायदा, कुछ ना कुछ तो लूज करना ही है, तो एक तो लूज ही होगा। वाह, क्योंकि वो वैसे भी तो वो ही होना है ना। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ना ना नहीं होगा, नहीं जाना चाहिए था वहां पर। दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। भाई तू हटा ले अपना, यहाँ पर लेके आ सकता है वैसे, इतना बुरा भी खिलाड़ी नहीं है, मैंने अंडर एस्टिमेट किया शायद। Don't underestimate the power of. Oh wow. Oh wow. Aha. Aham. Kishu. Aham. Aham kishu. भाई तू तो कितना खतरनाक निकला भाई, कितना खतरनाक। आई एम सो इम्प्रेस्ड। अब तो तू यहाँ पर लेके आएगा, फिर मेरे पास कहीं जाने का नहीं। चेकमेट हो गया रे, चेकमेट बंदूक। ओवर स्मार्ट लड़की का ऐसा ही होता है इसके साथ। मेरा चेकमेट होने वाला है, मैं नहीं देखूंगी, मैं हारने वाली हूँ ना। ओह ओह वाओ, ही मिस्ड इट। नाइसू नाइसू नाइसू। लेकिन कौन सा वाला खेलूं मैं? चलो बिशॉप सेक्रीफाइस कर ही देते हैं ना, कौन करेगा, मैं तो नहीं करने वाली। फक। I thought he was noob. Damn. Fuck. You think you can outplay me?
fuck. Oh fuck. गया मेरा रुक का तो नाम राम राम सत्य है। सत्य है ना, सत्य। काहे इतना नाइंसाफी हो रहा है मेरे साथ। मेरा अब नाइट हैंग कर रहा है। ये देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन देख लिया। नाइस। I wasn't expecting it though, but nice. Last salah. कुछ उसने मुझे निकालने का मौका ही नहीं दिया ना। तो मैं क्या करूं? ओहो, नाइस नाइस। नाइस नाइस। क्या नाइस नाइस? कुछ नाइस नाइस नहीं है। नथिंग इज नाइस नाइस। देखा? I don't know. मुझे लगा अब तो है मेरा बल्ले बल्ले, लेकिन ये तो बल्ले बल्ले का नाम ही नहीं दे रहा है। बल्ले बल्ले का नाम ही नहीं लेने का दे रहा है। आई नो वो यहाँ पर निकालेगा, इतना भोंदू तो नहीं है। आई न्यू इट ब्रो, आई न्यू इट। तुम्हारे खेलने से पहले ही मुझे पता चल गया था। ओहो, इसको हैंग करने मत देना। ना। If you miss the train I'm on. Oh fuck! Why am I so dumb? Resign. अब पोलिनोमियल्स पढ़ते हैं ना।
उससे पहले मैं अपना फ़ाइल ना इस फ़ोन में ट्रांसफ़र करती हूँ, हाँ, इस फ़ोन में है ना।